Okay, that should be working now. Now you can try again. Yashvi and Pooja, have you completed all the practical transactions which are allotted? Yes. Yes. Okay. Harshal, what we are doing in our session, one person is doing transaction in their QBO file. Okay, after the discussion and everything, and the rest three has to complete that practical assignment before the end of tomorrow, means by the next day. All right. And also you all get recorded videos also. I have available that. So in case if you have any query, so you can refer that video and you can make the transactions. Okay. सर हाँ नहीं हो रहा है यहाँ से ऐड न्यू। ठीक है, मैं अभी तो चार्ट ऑफ अकाउंट से ही क्रिएट कर लूंगी। जस्ट बाद में जस्ट देख इट शुड बी वर्किंग है, वो क्यों काम क्यों नहीं कर रहा है? इनका अपडेट आया है, ऐसा कुछ है क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विस व्हाट्स हैपनिंग? लॉग आउट करके लॉग इन। ये तो हो रहा है, सिर्फ कैटेगरी नहीं हो दैट इज नॉट कैटेगरी, दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट रहा। प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं हो रहा। मैंने 2-3 बार किया था लॉग इन लॉग आउट। स्पेस टैब ट्राई करो। कैसे? ये यहाँ पे हो ना, यहाँ पे स्पेस दबाओ और फिर टैप करो। स्पेस टैब। नहीं, कुछ लिखो मत, डायरेक्ट स्पेस टैप करो। नहीं, वो तो नेक्स्ट इस पे चला गया। स्पेस उससे टैब भी होता है। जस्ट अ मिनट रुको। रुको, मैं ट्राई करती नो इट्स नॉट लाइक आप सबके वहां पे हो रहा है ये। हूँ। हर्षल, कैन यू चेक इट फ्रॉम हियर? वी कैन क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट आइटम्स। In bill section, sir. हाँ या जस्ट गो टू द bill or invoice wherever you can. Bill, that is better if you go with the bills, vendor center and bills. यशवी, हो रहा है वहां पे? ट्राई करती हूँ सर। हिमांशी, कहाँ रह गए? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, हिमांशी की। हिमांशी की? हिमांशी गए वो वापस। नहीं हो रहा है ऐसे। अच्छा, नहीं हो रहा है क्या? नो, सो दैट्स द प्रॉब्लम फ्रॉम क्यू। हाँ ये तो अपडेट हो रहा होगा, सो नॉट एन ठीक इशू। है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। Now let's go with the next one. 22nd, हाँ। सेल इन्वेंट्री वर्थ Wait, wait, $4,500। wait, 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 wait. Harshal जो है, she is new here, so I'm just gonna explain a bit to her. Harshal, see, there are three files: customer center, vendor center, and final transaction, Interest. right? So this is that third number file. Do you have that file or not? Yes, I have. Okay, so we can keep it open. Okay, so these are we have what we have done. We have completed this one, 10 transactions, and other 10 transactions. Means 20 transactions we have completed. All right. Okay, now we are going to start with this 21st. So I'll cover all this with you during the extra classes. Okay. All right. No problem. So you have to be more conscious, more accurate, and more faster to cover up all these things. Okay. And for QBO Pro Advisor Certificate, we are going to give exam all together. देखते हैं फिर चार में से किस कौन पास होता है, कितनी जल्दी पास होता है, कितनी जल्दी किसके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, right? Okay, then
Okay, so 21 transaction. Purchase inventory worth 3,000 on credit. Okay. So whose turn is today? Pooja? हाँ मैं ही कर रही हूँ. Okay, so please go ahead. See now, please explain the transaction first and then record. Okay. Okay. Purchase inventory worth $3,000 on credit. Then we will make a bill of $3,000. Hmm. I've already posted this transaction. Let me just open it. You already recorded that transaction. Okay. I have selected ABC Corp as a vendor and then sir इतना explanation करना है. Okay, Harshal, what we are doing? We are recording bill for the vendor. Okay. And we are using item details means inventory names. Stationery. I have chose stationery as an inventory. Then quantity is 300 and rate is 10 per quantity. Then the Try amount to will, do communication in English because you are getting coaching for US accounting. Okay, so yeah, try to communicate in English as much as you can. yes. This is And gonna help you in future also when you go for the interview or when you do work in a corporate or when you have one-on-one client meetings. So you have to be more accurate into that. It's a call way of communication which is included in our brochure. Okay. yes. Now Himanshi again gone. Yeah, please go ahead. Yes. Next transaction is sell inventory worth $4,500 to a customer on account. It means the payment has been done by bank on account. As the transaction mentioned on account. On account means on credit. Okay. I thought it is like payment has been done by bank on account. That's on account means on credit. Sure. What you have to do, we have to raise invoice. Yes. If it is in cash sales, so what you have to do, you have to record sales receipt. Girls, Yes, following. sure you are getting now. Yes, sir. See, whenever you have any query, you can just raise your query. Okay, we'll explain. Okay. I'm just creating a inventory product. Hmm. So you got now from where to create inventory items? Yes, sir. Okay, good.
No need to write down quantity or anything. What you need to do, you just need to copy that entire line item and just paste over here the task. So in case if you have to, if you needed to find this transaction, you just find it by the memo. Record the cost of goods sold for the inventory sold in question number 22. Record the cost of goods sold for the inventory sold in question Sold. 22. Okay. Hmm. Now, Yes. the inventory which you have considered, have you purchased this inventory till now? No. Right? No. Hmm. Okay. So that should be showing as a negative. Yes. QBO. Sir, we have sold that inventory now, not purchased. We have sold. Oh, yeah. But we what they are saying, we have to record COGS. Okay. So when you get the Yes. COGS, if you have purchase cost and sell Yes. Raw material. cost, so we have to recognize purchase cost. Okay. Okay, so please open that QuickBooks file and go to the inventory master and open that product which you have created. Okay. No, no, not to the invoice, not to the invoice. What we have to do, we have to go to the product list. From where we have to go? From here, just only from here. Okay, then product and services. Okay, which one you have created? Mobile. It is showing minus 350. How many quantities you have recorded as a sale? 4500, right? Uh, 4500. So you have mentioned 450. It is showing 350. Why? इन्वेस्ट कितने का रिकॉर्ड किया है? सर वो ऑन हैंड इन्वेंट्री ऑन हैंड 100 ऑन हैंड 100 कहाँ से आई? परचेज डाला था पहले कहीं पे? नहीं. देन परचेज प्रोडक्ट क्रिएट किया तब एडिट किया, ऐड किया. Yes. Here in inventory info, reorder point is 50 and quantity on hand. क्वांटिटी में 100 कहाँ लिखा है? नहीं है ना? क्वांटिटी ऑन मैंने लिखा था. इन्होंने डाला था. हाँ. 100 डाला हुआ था ना, तो हुआ क्या कि $100 से ऑलरेडी उन्होंने इन्वेंट्री क्रिएट कर दी. दैट इज द रीजन इट इज शोइंग 350 माइनस, क्योंकि सेल में तो आपने 450 लिया ना. ओके. Yes.
सेल का प्राइस क्या रखा हुआ है 10. तो नाउ रिकॉर्ड Yes. वन बिल फॉर द सेम प्रोडक्ट with the price of 8, quantity 450 and price 8. उससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. गॉट इट? Sir, Yes. I not got the point. ओके सी, इन्होंने क्या किया है, व्हाट शी हैज डन, शी हैज रेज इनवॉइस ऑफ 450 यूनिट्स, but we don't have 450 units on hand. Okay, so without it how can we record expense? We have recorded only income, see here, but expense should be there na. And guys, whenever you create new product, never enter starting balance. Okay, Okay. P&L column by month. Got it? Now what you have done, you have recorded 4500. Yes. You have created under services. Products and services. Yeah, but the type of product. In I chose their inventory only, not services. It is showing only in cost of goods sold. Go back. Down, here. The amount. Okay, this one. So now what we have to we are going to do, as of now what we can see, only income. Okay, Yes. we can't see COGS. Okay. Okay, now what we are going to do, we are going to record one bill. Category means chart of account. Yes. Sir, what if I record 1,000 units in quantity on hand? Where? For this product? Yes. How is that possible? While creating mobile phone. As of now, what we have sold for 450 units, what we have recorded, it is not showing 1000 units. No, I'm just asking that I have recorded their 100 units quantity on hand. Okay. So you are saying 1000, that is why. Yes. Then the amount now quantity on hand here is minus 350. And if there I record 1,000 quantity, then here the quantity on hand will be in positive figure. Okay. What we have done, we have recorded 1000 quantity units at the rate of 8. Okay. Change. Here it was 300 only. Arshal, you got this? Sir, It was I showing got. 300 only. Now it is showing 3000. 3300.
3600. Yes. How many? What was the quantity unit? 450 na? Yes. 450 into 8. Got it? Yes. Harshal, did you get this or not? Because it's a bit complicated. You understand na? Sir, little bit, not fully. Okay, so not an issue. See, what's happening when we record purchase, okay, just like if we have purchased 1000 units, at that time, it is not showing here. It is going to the balance sheet under the inventory. Okay. Okay. But when we record sale of that, so the actual amount it is coming here. Let me show you using Excel. This will give you better idea. See, purchase 1000 units at the rate of $8. Okay. So now the actual cost is 8,000. So when I record this bill, at that time we get entry like inventory, assets, debit, and vendor Okay. credit. Okay, with the amount of 8,000. But now when I sell product, when I sell 450 units out of these 800, 1000, okay? So 3600. Okay, so let's make it here. Uh, we add minus here. So 3600. Okay, this is sale entry. This is purchase entry, the first one. And now we are recording sales entry. Okay, Yes. so what will happen in a cell? But see, this is the cost. This is not selling price. Okay, so when I make sell at the rate of $10, okay, so customer debit. Let's To say I inventory. sell 450 units at the rate of 10. Yes. Okay, and sales credit at that 450 into 10. 10. Okay, now what about the cost of goods sold? What is the cost of goods sold? Means whatever you are selling, what was the actual cost of that? Okay, so when we record invoice, we record only this one, but in a backend, they add another entry, and that is COGS debit, inventory credit. And what should be the amount? The actual cost. Got it? Yes, I got it. So when we see in our balance sheet, we will see this balance 300 minus 8,000 minus 3600. So we will have 4,400 in our balance sheet. Okay. Okay. So these are the scenario. Again, everyone understand? Yes. Yes. Harshal, अगर पता नहीं चला, then I can repeat, no issue. No, sir, understand. Listen na. Yes. COGS means the cost of Cost of goods sale. sold. Okay. Okay. Done. Pooja, did you get it or not? Yes, sir. हाँ तो वैसे ही ऐसे don't record everything. Okay. So we have covered second point also. Return 500 of damaged inventory to the suppliers. Now do the same thing for inventory again.
Return of 500 damaged inventory to the supplier. What we have to record? सर वहाँ Yes. लास्ट टाइम जो एंट्री हमने करी थी वो रिटर्न मतलब ईडी था ना, उसमें रिटर्न हो गया है, पहले से कंफर्म हो रहा था, तो अभी क्या क्रेडिट मीमो बनाएंगे या फिर इन्वेंट्री हमने फिर से रिटर्न कर दी, ऐसे करना है? रिटर्न कर दिए तो हम डेबिट मेमो रेज करेंगे ना सप्लायर को। ओके, देखो 4 ट्रांजेक्शन होते हैं। जब हम परचेस करते हैं तो बिल रिकॉर्ड होता है, रिटर्न करते हैं तब हम डेबिट मेमो देते हैं, सेल करते हैं तो इनवॉइस होता है, और वो हमें रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट मेमो देते हैं। एवरीवन क्लियर? Yes. ओके। एडजस्ट इन्वेंट्री फॉर श्रिंकेज ऑफ $200। ओके, फ्रॉम वेयर वी हैव टू रिकॉर्ड? सर इन्वेंट्री क्वांटिटी एडजस्टमेंट। ओके, एंड वेयर इट इज अवेलेबल? सर वी हैव टू गो टू द न्यू टैब। ओके, Harshal, you Yes. get it? Yes. Here Yes. is the new tab, and we will go to the other column, and here is the option inventory quantity adjustment. $25. Harshal, as you see adjustment reasons here in drop down, Yes. so we select here shrinkage, and here on account it's inventory shrinkage. and please select mobile here because we know about their price. The product, yeah, mobile. See here you will see only inventory items only, okay, not services. Okay, Okay. now what we have to record? $200 divided by 8. Why 8? Because 8 is our purchase cost. Okay, so change in quantity, what we have to do? 200 Divide by 8. Why it's yeah, not allowing now? Okay, Fine. before they were allowing you here, you can write it like plus minus everything. 200 divided by 8, so you can write 25. Okay, changing quantity. Now save and close. Wait. Here what happened? We have increased quantity.
Let me show you what happened. Okay. This one, okay? Whenever you record anything, you have to make sure what you are doing. The new inventory status as of now, how much it is showing? Let's see. It is showing 675, but that should be 625. Yes. इससे हुआ क्या? Inventory increased, but we have to reduce that. यशवी हिमांशी, हिमांशी ध्यान रखना. आई एम जस्ट -25. बैठे बैठे सो जाते हो, आई नो. सर कहाँ सोती हूँ मैं, आपको आवाज ही नहीं आती है. Okay, minus means we have reduced that quantity. $625. Okay, so Yes. now where you can see this effect in profit and loss. Do you remember this? Yes, sir. Inventory shrinkage $200. Okay, Harshal, Pooja, Yashvi, Himanshi, Yes. got it Yes. now? Yes, This yes. is how we have to record. Day before yesterday we had query like amount proper नहीं आ रही थी, right? Now that is resolved. How to make it done? Now let's go with next one. So Create an here we have completed 5 transactions of inventory, and in this 5 transactions we learn how to record bills, means purchase on a credit, how to record sales on a credit, how to recognize COGS, how to record debit memo, and how to record inventory adjustment. Yes. Got it? So you can say only 5 lines, but these 5 lines contains all the sales and purchase related transactions, including inventory. Got my point? Yes, sir. Or sir, okay na? Yeah, okay, sir. Okay, so this is the thing which we are going to learn step by steps, and these are only 25 transactions. We have still 325 transactions, just like this. Okay. And then we should not have any transaction out of this syllabus. Okay, Okay. so let's go with customer and vendor transactions. These are the basic transactions. So, Pooja, you have Yes. to speed up this. Yes, sir. If it is saying ABC Corporation, then create a new any other name. Sir. Create a new customer account for ABC Corporation. Create Means any other name. You can take any other name. No need to go with ABC Corporation then. Create a new account with any other new name.
Record a sale of $2,000 to ABC Corporation. Okay, pick that mobile as a mobile accessories, means a mobile product only, and record the sales. Right. $27. Create a new vendor account. XYZ Supplies. Harshal, I have created already XYZ name vendor account. So I am creating PQR. We already have that name. That's why we are creating new one. You know how to create customers and vendors, right? Yes, I know. Okay, great. Record a purchase of $1,200 from XYZ. Why you are going with calculator? Missing sir. मोबाइल फोन ही यूज करूँ. Just Record a payment of $1,000 to X. Pooja, one question. We have recorded the purchase entry in some bills. So why we not enter in purchase order? Because that the purchase order is mentioned that. Yes. So in actually That is- many companies, we are doing purchase order. We are creating purchase order before creating invoices. All right. Yes. It's a process of creating first purchase order, then we are creating invoices. All right. Thank you. Got your point. So should I go with purchase order or is this the right? That's right. Record a payment of $1,000 to XYZ. XYZ QR.
Bank and loan transactions. Open a new bank account with an initial deposit of $10,000. यशवी इसका जर्नल एंट्री करते टाइम अगर क्रिएट किया तो चलेगा? बैंक डिपॉजिट में करो ना, अच्छा, वहां पे न्यू क्रिएट भी कर सकते। हम्म, कहाँ गया वो? पता नहीं, एक बार चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करो। गियर आइकन से गियर आइकन ऊपर यहाँ पे, यहाँ से हाँ हाँ वहां से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके वहां पे सर्च। ठीक, यहाँ पे तो शो हो रहा है। एक बार वापस ट्राई करो बैंक डिपॉजिट का। अकाउंट टाइप तो सही है। क्या? एक बार वो वाला पेज रिफ्रेश करके करना था ट्राई। ओके, हाँ, नाम ले लो या आपका या कुछ। ये हमारा कैपिटल का टाइप हो गया ना। हमने नहीं इनिशियल कैपिटल नहीं होगा। डिपॉजिट किया, बैंक में इनिशियल डिपॉजिट किया 10,000, तो ये वो जो कैपिटल में ही होगा। अगर ओनर कुछ डाल रहा है ना बिजनेस में तो वो कैपिटल होगा। ऑलरेडी नहीं क्रिएट किया। नहीं, वो एम्प्लॉय में जाके क्रिएट करा था ना आपका नाम। हाँ, थर्ड ट्रांजेक्शन कुछ था। ये दो आगे किया है क्या? मैं बोल रही हूँ किया रहेगा, ऊपर ट्रांजेक्शन था कैपिटल। आ गया, जाने दो, बाद में मर्ज कर लूंगी। इक्विटी। ये कर दूं? एक बार देखो, आपने क्रिएट ये भी क्रिएट करा होगा आपके नाम के आपके साथ। नेम से ही। नहीं किया है वो मैंने। नहीं किया तो कर दो क्रिएट आपके नेम से वापस। इक्विटी, ओनर्स इक्विटी,
यहाँ पे आपका नेम मेंशन। ये अकाउंट में कुछ डिस्क्रिप्शन और डालना है क्या? पूजा खैरनार सिक्योरिटी करके? नहीं, ठीक है ना नहीं। ठीक है, डाला आपको डाल सकते हो कुछ, मैंने तो नहीं डाला। एक बार सर से कंफर्म कर देना यार। ठीक है। Recording $5,000 loan advance from the bank. पहले बैंक में डिपॉजिट हुआ है वो एंट्री। वो तो कर, हाँ वो वाला बाकी है। 5,032 वाली बाकी है ना। हाँ 30। उसका पहले डिपॉजिट करने का दिखाना है क्या? हाँ बैंक डिपॉजिट से डाल। ये एंट्री 5,000 की, फिर पेमेंट। बैंक डिपॉजिट से। ये भी ऑलरेडी क्रिएटेड होगा ना आपने? अरे लास्ट टाइम जो मैंने किया ना, तो पता नहीं क्या इशू आ रहा था, तो एंट्री ऐड ही नहीं हुआ है। एक बार वापस से एक बार सर्च करके देख लो। जाने दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऊपर के ट्रांजेक्शन हुए हैं ना आपके? पीओआई क्या लिखो? फाइनेंशियल्स लिखो। हाँ कुछ भी। एक बार आपने क्रिएट करा होगा कुछ, कोई फाइनेंस लिमिटेड करके। सेव। लोन पेबल। अकाउंट्स पेबल कैसे होगा? पे करना है लोन ना। पेबल, लोन है ना? एक्चुअली हम, ये हर्षल ने पूछा तो नहीं, क्या? अकाउंट्स लोन पेबल, लोन पे बताएगा, लोन लिया है। हमारी जनरल एंट्री कैसे होती है? बैंक टू बैंक लोन। ये भी क्रिएट करना होगा। सही बताओ, आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया यहाँ पे करंट नहीं, लायबिलिटी, ये तो पूछा आपने ही बता। अदर करंट लायबिलिटी। ये वाला आपने ही बताया, पॉइंट बता, तो जब मैं कर रही थी ना तब आप ही बोल रहे थे उधर करंट लायबिलिटी है, उधर करंट लायबिलिटी। अरे इंटरव्यू चल रहा था मेरा। लोन पेबल, लोन पेबल। यहाँ पे भी। क्या हो गया? मेरे बिना सब इतने हंस रहे थे, क्या था? तो मैं क्लास में से निकल जाऊं? नहीं, देन हर्षल, व्हाट हैपन? Nothing, sir.
We are just posting transaction, nothing else. Okay. ये इसका ही आएगा ना? नहीं, लोन पेबल। श्रीराम नाम लिख के टेबल लिख दो ताकि ध्यान रखे इसमें। हाँ पेबल कहाँ पे क्वेरी आ रही मुझे बताओ। ठीक है ना, लोग पेबल होगा या पेबल होगा? स्पेलिंग का ये सही है। Which transactions? चल 32। अभी वहीं पे हो? हाँ, क्योंकि मैं सारे अकाउंट्स क्रिएट कर रही हूँ सर। Record of 500 loan advance from the bank. लोन अकाउंट क्रिएट करो। कर दिया। ओके, सीएम फाइनेंस ओके, लोन एडवांस फ्रॉम ओके। कहाँ पे क्रिएट किया? लोन अकाउंट के अंदर, लोन पेबल, अदर करंट एसेट, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, then record it. Harshal, you are getting now all the transactions? Little bit, sir, not fully. Why little bit? See, we have received loan from bank. Okay, if we take personal money from anyone, so what should be the transaction? We are getting fund in our bank. So whoever recipient, we have to debit that. So in this case, bank debit, Cash credit. loan payable credit. Clear? Yes. Okay. Now let's go to the next. सर अभी जर्नल एंट्री कर रही हूँ। ये जनरल एंट्री कर दो। वो उसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा कि हमने लोन एडवांस फ्रॉम द बैंक करके? It's already posted. You can check on balance sheet. वो एंट्री नहीं आएगा क्या कि उनको हम पे करेंगे करके? मतलब वो वो पेबल रहेंगे, ऐसे नहीं आएगा? Record the repayment of 1000 of the principal. तो इट्स अ चेक। हम अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे? ये जो भी रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जहां से फंड गया हो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो फंड किसको हम पे कर रहे हैं? तो श्रीराम फाइनेंस को। ओके, तो वो होगा डेबिट। कहाँ से जा रहा है फंड? तो बैंक में से जा रहा है। तो अगर आपने चेक का मॉड्यूल यूज किया हुआ है तो ऑलरेडी बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो इसका चेक के थ्रू ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है? चेक के थ्रू रिकॉर्ड होगा ना। Whatever we receive is going to bank deposit, and whatever we pay is going to be check. यहाँ से कर सकते हैं ना? इनको ही पेमेंट कर रहे हैं ना, तो सच्ची बताओ, मतलब यही है ना? यहाँ से ही हाँ। होगा ना? हाँ, कर पेमेंट टू, पेमेंट फ्रॉम मतलब बैंक अकाउंट। ओके, हाँ, यहाँ पे कैटेगरी मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट कौन सा आएगा यहाँ पे नाम?
लोन पेबल का लोन पेबल नहीं, यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस आएगा। आपने ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर वो नाम से बनाया हुआ है। पे में श्रीराम फाइनेंस आएगा ना? सर मैंने ये बनाया है तो हाँ। यही है ना। हाँ। जब दूसरे करते हैं तब मजा आता है बताने में, और जब खुद करते हैं ना तब पता चलता है क्या हुआ? जब यशवी यशवी खुद से ही सब ट्रांजेक्शन अच्छे से करते हैं, बट हिमांशी तब जब सब हम खुद करते हैं तब पता चलता है कितना कंफ्यूजन होता ये कंफ्यूजिंग नहीं है, डोंट टेक इट कंफ्यूज, एकदम सिंपल है। सिंपल एक ही रूल याद रखना है, जिसको भी पेमेंट जाता है वो अकाउंट डेबिट होगा। जो भी बेनिफिशियरी है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी, इन टर्म्स ऑफ कैश और बैंक, जो भी बेनिफिशियरी है वो अकाउंट डेबिट होगा। जैसे कि हम किसी को अगर पेमेंट करते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। अगर हम किसी को सेल करते हैं तो जिसको सेल किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री उसको बेनिफिट हुआ, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। दैट इज वेरी सिंपल रूल। अभी आप श्रीराम फाइनेंस को पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। है। हाँ। तो हमारा अकाउंट हुआ क्रेडिट। हम कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं? बैंक में से। बैंक का अकाउंट हुआ क्रेडिट। अब श्रीराम फाइनेंस को हम पेमेंट करें तो श्रीराम फाइनेंस होगा डेबिट। और जब श्रीराम फाइनेंस ने हमको लोन दी, when we get when we have received from Shriram Finance, so our bank become recipient. Okay, so we debit our bank, and who is sender? So Shriram Finance. So we have credited Shriram Finance. So whoever is beneficiary, we have to debit that account. एक्सपेंसेस से बुक होगा ना। No, expense not expense. We have to write through check. This is not your expense. Expense we have to use only when we record actual expense. This is not your expense. This is your liability. Just write it down, na? इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएट करना पड़ेगा। Not. Yes. No. Why you are confusing? Category means chart of accounts. That is already available here. Just write down Sriram. That is already here. But sir, this is interest Sorry? interest payable. वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे सर। Just a minute. What is it? Is it a capital or interest? इंटरेस्ट ऑन लोन। Last time I created interest paid chart of account. Have you recorded 33 number transaction? यस। Yes. Okay, so if there is an interest, so first of all, Interest on loan. okay, so if interest, so that is your expense. Sorry, my mistake. I was thinking you are going with 33 number transactions. तो मैंने एक्सपेंस। Okay, so it is 34 number transaction, so you have to go with expense. So you close this transaction and record expense. यहाँ से वो नहीं दे रहा है।
What happened? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट वो क्रिएट कर रही हूँ. Yes. करंट Expense. एक्सपेंसेस Expense. जा ही नहीं रहा. Interest. यहाँ पे भी करना है. नहीं बस हो गया से. ऊपर जाके कहाँ पर शो करेगा फिर. Record payroll and tax transactions for payroll expenses of $5,000. Okay, so in that case, what you have to do? What is our expense? Payroll expense. Payroll expenses. That is where from where it is going? From bank account. Okay, so payroll expense debit, bank account credit, and we have to record this Journal entry. through expense. Journal entry we have to use only when we don't have any other option. Here you can write down paychecks, the name of company. कौन सा भी Paychecks. क्रिएट करना पड़ेगा. हाँ. Salary and wages. Please cancel this. There is an account, salary and wages, already available in chart of account, if I'm not wrong. हाँ. Okay, please find it out. फिर तो ये क्लोज कर दूँ. हाँ, close कर दो. No, just first of all check कर लो salary and wages available or not. So just go to the chart of account and check it. And from where you can go, okay. Salaries and wages. Okay. Yes. तो ये सिलेक्ट करूँ और डिस्क्रिप्शन में पेरोल एक्सपेंसेस डालना है. Right. Salary and wages means that is payroll.
And whenever you work in US companies, so in a description you have to mention period. It is not mentioned over here, but I'm telling you the how you mention that. Just like for the month of September. No, they have just a minute. They have salary on weekly, bi-weekly, fortnight, or monthly basis. In very rare case, on a monthly basis for the directors and everything, here you have to mention like this. Salary for 9, 12, 2, 9, 70. Okay, you have to mention like this. Same should be here also. Okay. Okay. Uh, 35. You can do it. हो गया? Record payroll liability of $1,500. Sir, payroll liabilities, advance salary type. Sir, Payroll liabilities you have to create. Think this is your own company's transactions, and then you have to pay 1,500 payroll liabilities. No need to create account. First of all, check it. It is available or not. That is already available. मैंने तो देखती हूँ मैं check करती हूँ. Accrued payroll taxes. Got it? अच्छा. No, accrued payroll tax, that's a different thing. Payroll liability is a different thing. Accrued payroll tax, like expense occurred, but we haven't paid them. Barabar? But what if for the payroll liabilities, we have to pay during the period. Okay, payroll liabilities. सर ये डिटेल टाइप भी अदर करंट लैब पेरोल क्लियरिंग पेरोल टैक्स पेबल अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर Payroll liability is a type of tax, na, right? Payroll tax payable. Or just a minute. Do you know what is payroll clearing account? नो सर With access. Let's go with the payroll entries. I hope we have already discussed about this, but again, payroll expense, debit, credit, okay. Then social securities, Medicare, Uta state unemployment tax, federal unemployment tax. Okay, 401k plan. And other taxes like disability insurance or any other insurance. So all this coming over here. Now, these are my payroll expenses in total. Okay. Now, let's say payroll expenses of $5,000. Social Security and Medicare both for 250 and 175. Make it 45 and 50. We are paying 700 per month. Another tax is 45. So in total, the amount is 76.5. Okay. Now what I have to do?
I have to create liability for them. This transaction we have to record through JV. Arshal, are you getting or not? Yes, sir, getting. This is payroll expense entry. Whenever we record payroll transactions, okay? So we record payroll expense, their taxes. We are going to call a payroll chapter separately, but this is I'm showing you as a basic. Okay. Okay, sir. Now, payroll expense. We have recorded expense, but we haven't paid it. So what we have to do? We have to create our liability, right? So here we can say payroll taxes. It is 565. Okay. Then 401 K plan 17. table 1700. If this is paid by the company only, then we have to, okay? Or what we can do? This is the part of salary also. We deduct from employee account and then we pay. Okay, so we can do that also. So, either way we can do it. That depends upon the payroll report which we are getting from the client. So now what is the amount left? That is our payroll link account. This is payroll taxes payable, no? We have separated both account. For the taxes, we have created on the separate account. For the net payroll, we have created on the separate account. And for the 401k, we have created separate account. Okay. What should be the amount over here? 2265. Okay, so we have to create here. मेरा इंटरनेट चला गया हुआ है कि आप चारों स्टॉप हो चुके हो? ओके, चार हो, हयात में हो, ओके। सी अब समझो कि आपकी कंपनी है, ओके, आपको 5000 सैलरी किसी को पे करना है। अब उसमें से जो टैक्स होगा वो टैक्स तो आप डिडक्ट करोगे, राइट? तो इसमें क्या होता है कि आपने टैक्स डिडक्ट किया तो वो आपकी लायबिलिटी हुई, वो आपको गवर्नमेंट को पे तो करना पड़ेगा ना, तो वो हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमने वो टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट की। और एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरा रिटायरमेंट प्लान है, उसका भी डिडक्शन 401k, इट्स अ रिटायरमेंट प्लान। ओके, तो एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरे सैलरी में से रिटायरमेंट प्लान जो है उसका भी डिडक्शन आप कीजिए, तो हमने वो भी डिडक्शन किया। ओके, अब बाकी जो अमाउंट बची है वो तो हमें एम्प्लॉय को पे करनी पड़ेगी, तो दिस इज द नेट अमाउंट। हमारा एक्चुअल पेरोल एक्सपेंस कितना हुआ? दिस वन 5425, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है। ओके, मैं आपको थोड़ा इसको और डिटेल में बता दूं। डबल ई मतलब एम्प्लॉय। ओके, दिस वन मींस ईआर मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का तो ये था ही, और एम्प्लॉय को भी पे करना पड़ेगा, तो 265 और 175। ओके, तो आपका टोटल पेरोल एक्सपेंस जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा डबल। ये जब हम एक्चुअली एंट्री डालेंगे तब मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताऊंगा, मैं आपको एक पेरोल रिपोर्ट भी दूंगा, उसके अंदर से आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक? तो ये सारी चीजें रहेगी पेरोल एक्सपेंस में।
ये एम्प्लॉय का टोटल जो था उसके अंदर हमने डिडक्शन किया था वो पार्ट है। ओके, और ये जो था एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खुद के जेब में से जो पे किया हुआ है वो है। अर्शल, योर कंप्यूटर इज वर्किंग फाइन। Yes, sir. ओके, बैटरी आउट ऑफ बैटरी हो गई थी ना, ध्यान ही नहीं था, राइट? यस, आई न्यू दैट। ओके, सो सी दिस इज आवर एम्प्लॉय ग्रॉस पे। Gross pay and net pay. Gross pay means including all, and net pay after the deduction of taxes. Okay. So here it is showing what the total 690, and here we have 783. y. Where is the difference? कौन सी चीज हमने लेनी रहेगी? 140. What's that? 40 उनके 1700 ले लिया, ये ले लिया। How is it possible? ये सूटा फूटा और अदर टैक्सेस का 148. ओके, तो ओके, हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना, राइट? ओके, वो सेट दिस। पूजा. चलो, मतलब आपको टैक्सेस आ गया, मतलब पेरोल जो है वो आपका क्लियर हो गया। नहीं, जब कोई दूसरा करता है ना तभी आता है, जब मैं खुद से करती हूँ तब कुछ नहीं आता है. बेड़ा करो तो आपका। मुझे तो ये देखना है कि ये जो मैडम बैठे हुए हैं बीच में वो बड़ा टेडी बियर लेके, हाउ शी गोना डू दैट। देखता हूँ ये मुझे सबमिशन कब मिलेगा इसका। मंडे। आज कौन सा है? आज फ्राइडे। ओके, हाँ, कंप्लीट करके मुझे जो भी हो अपडेट करना। एंड हर्षल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, एंड हर्षल, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, थोड़ा स्पीड अप करके प्रैक्टिस करना रहेगा। ओके, तो देखो अब हम जो एक ट्रांजेक्शन पे थे, सी पेरोल वी लाइव. शुड नॉट वरी अबाउट द सिलेबस, वो हम कवर कर लेंगे। ओके, अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो आई डोंट माइंड। द मेन थिंग इज आप लोगों को सही से समझ आना चाहिए। ओके, नाउ कौन सा था ट्रांजेक्शन? इट इज लाइबिलिटी. रिकॉर्ड पेरोल लाइबिलिटीज ऑफ. 36 number transaction. Okay, 36 number transactions, record payroll liability. So now as per the Excel, अब मुझे बताओ, देखो इस तरह से हुआ, ठीक है। अब पेरोल लाइबिलिटी हमको रिकॉर्ड करनी है, तो व्हाट विल डू? पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पेरोल टैक्स पेबल क्रेडिट, राइट? वी गोना डू दैट ना। तो अब एक ये कैसे रिकॉर्ड होगा? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन इनटू QBO, सो वी हैव टू यूज J, जर्नल एंट्री। जब हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए उनका स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, एट द टाइम वी विल यूज जर्नल एंट्री। सो प्लीज रिकॉर्ड। सर ये क्रिएट करूं पेरोल लाइबिलिटीज का. हाँ, वो क्रिएट करो। ये पेरोल टैक्स अदर लाइबिलिटीज में आएगा या पेरोल क्लियरिंग. पेरोल टैक्स पेबल। हाँ, ओके।
ये एक्सेल जो है वो सेव कर लेना और सबको शेयर भी कर देना। यस सर। ठीक? फिर यहाँ पे बैंक को क्रेडिट। यू आर डूइंग रॉन्ग। हमारा एक्चुअल एक्सपेंस क्या है? पेरोल लायबिलिटीज है ना। एक्सपेंस। पहले लायबिलिटी क्रिएट करो। हम लायबिलिटी अगर क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे? एक्चुअल एक्सपेंस क्या है हमारा? पेरोल हुआ ना एक्चुअल एक्सपेंस। तो एक्चुअल एक्सपेंस हमारा क्या हुआ? पेरोल एक्सपेंस हुआ। और क्रेडिट करेंगे हम लायबिलिटी। तो क्रिएट ही करना पड़ेगा। नहीं, सैलरी एंड वेजेस है ना ऑलरेडी क्रिएट। तो उसके अंडर लेना है क्या? ना ना, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेंस। दिस पेरोल टैक्स पेबल क्रेडिट हुआ हाँ, तो डेबिट किया हुआ है सामने। वो पेरोल एक्सपेंसेस है ना। हाँ, तो पेरोल एक्सपेंस डेबिट करके हम पेरोल टैक्स पेबल जो है वो क्रेडिट करेंगे। मतलब हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी और एक्सपेंस बुक होगा। विदाउट लायबिलिटी क्रिएट करे आप पेमेंट कैसे करोगे? गॉट माई पॉइंट? ठीक। तो अभी ऊपर मैंने वही लिखा था ना, पेरोल लायबिलिटीज को डेबिट, नहीं पेरोल टैक्स पेबल को डेबिट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू, my salary revision is not coming. हाँ, पहले रीजन Salary wages is debit with 1500 and पेरोल लायबिलिटीज। payroll tax liability. Payroll liability, okay. Payroll liability, it is credit. So what is this? We have created our liability now. Okay, so without creating liability, how can we pay? Right? So we have just close this account, and where we can see what this transaction. Harshal, tell me where you can see what this transaction. There are two line item transaction. Okay, so where you can see that. On transaction The first line, salary and wages, where we can see that in P&L or in balance sheet? balance sheet Salary and wages and sorry, profit and loss and payroll liability. balance sheet. Okay, fine. Now raise the transaction for the payment. What the payment? How to record? Right. Make it 1500. Paychecks. 36, 37। ये करना है ना, या सैलरी एंड वेजेस ही आएगा। Why confused? आप पेमेंट किसके लिए कर रहे हो? पेरोल लायबिलिटीज। हाँ, तो लाइबिलिटी आएगा ना, तो फिर वहां पे सैलरी वेजेस क्यों आएगा? See, in order to pay salary and wages liability, which is called payroll liability. Okay, so we have to book first of all expense and then we can create liabilities. जब तक आपकी लाइबिलिटी आप क्रिएट ही नहीं करोगे, then how can you pay it? And that is why, और लाइबिलिटी कब खड़ी होती है?
जब हमें किसी को पेमेंट करना हो तब, तो हमने ना किया हो, दैट इज आइदर इट इज आवर एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, और वेंडर्स। मतलब किसी को अगर हमें पेमेंट करना है तो हम लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी बुक वन JV, that expense debit and liability credit. Okay. Now, if you debit again salary and wages, so what will happen? दो बार एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा एंड लायबिलिटी एज इट इज खड़ी रहेगी वहां पे। दैट इज रॉन्ग ना? Yes. ओके, so what we have to do? We have to debit liability. Okay, please go ahead with the transaction. Is it completed? Yes. Record sales tax liability of $800. Record sales tax liability of 800, pay 800 in sales tax. Again the same transactions. Sales tax you are collecting from the customer. It's a part of your sales. Okay, so sales debit is sales tax credit. Better sales debit. Okay, yeah, perfect. You are going through with JV. इसमें Yeah, sales of income. You can select the first one. It's okay. You just need to record income. 800. Okay, and at the below you need to record. sales tax liability. Yeah. Tax to be फिर वहां से क्रिएट करना पड़ेगा। Wait. What is not available? Sales tax. California Department of Revenue. That is name. The Department of No, that is name. That's the name. That is the name. yes. Okay, that's the name. That's not liability account. तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो ना? आ नहीं रहा है ना आज, कुछ तो हाँ इश्यू है। शॉर्टकट है, ट्राई करके देखो, कंट्रोल ऑल्टर प्लस। Just a minute. Let's see what are the accounts available. Equity, expense, income liability, long-term loan, before tax liability. No, we don't have account, so we have to create it. So just go here. Next tab, transactions, chart of account. Also from here we can go to the chart of account of transactions and then chart of account. Okay. And what you can do, you can just bookmark here. When you click on bookmark, you can see here also. Okay, sir. Okay. Okay. Vela Molcha, let's make it fast. Sales tax payable. Yes. Right.
for the month of ऐसे लिखना है. no, it's okay. बट यहाँ पे ये नहीं आएगा ना डिस्क्रिप्शन में पेड तो liability creating. when you write here, आप अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो so that will it will take automatically. Okay, this is sales tax liability. Who is the name? What's the name? CA Department of Revenue. Have you created over here or not? नहीं, ये कैसे हो गया? कस्टमर हो रहा है शायद से. So here you have created liability. Okay, now you have to pay that. So how to do it? Check, Write it down. paychecks. Oh, madam, pay shouldn't be paychecks. That should be CA Department of Revenue. किसको पेमेंट कर रहे हो? पे मतलब किसके नाम का हम चेक कर रहे हो? Paid for the month of September. Amount and save. Now today we have completed 24 transactions, right?